गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? लेट मी चेक फर्स्ट. Today I am here to teach you ARD subject, means Agriculture and Rural Development for NABARD Grade A. First of all, I will introduce myself. I am Sarish Batra from Abohar, a city of Punjab. I have completed my Masters in Agriculture Economics from Khalsa College, Amritsar, and I have cleared IBPS AF exam 6 times, IFCO exam 1 time, FC exam 1 time. So I am here to teach you Agriculture for NABARD Grade A. Hope you like the class. First of all, share the class, like the class, and subscribe this channel. Clear? Okay. Let's start the class. First of all, introduction of agriculture. Introduction to agriculture. What is agriculture? जब भी कोई सब्जेक्ट शुरू करते हैं या कुछ भी शुरू करते हैं तो सबसे पहले है व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. इस वर्ड का क्या मतलब है? तो एग्रीकल्चर. Let's talk about agriculture. Agriculture word is derived from Latin word. Agriculture word is derived from Latin word agri and cultura. So it is a combination of two words. It is a combination of two words, means agar plus cultura. Agar plus cultura. There's an interesting fact that whenever you see a word culture or cultura, the word culture is originated from Latin word. The word culture is originated from Latin word. So almost most of the time the cultura word, where there is a cultura, it is originated from Latin word, except citriculture. Except citriculture and lag culture. Because as I said earlier, culture word is originated from Latin. So culture word is a Latin word. But lag is a Sanskrit word. Citri is a Greek word. Citri is a Greek word. Agriculture is derived from Latin word and a combination of two words, agar plus cultura. Agar plus cultura. No sound. Am I audible? Yeah. Some student is saying no sound. Am I audible to you? Please let me know, then we will continue the class. Just write in chat box, am I audible? Audible, sir. Okay. If I am not audible, please check your sound. Check your sound of your phone or laptop. Okay, let's start. Continue. Agar plus cultura. I am here. So agar is a Latin word and cultura is a Latin word. So both words are originated from Latin word. Agar means soil. Cultura means cultivation. Cultura means cultivation. So soil or land. From the beginning of the agriculture, जब ये agriculture बना तब it is only about cultivation of land or cultivation of soil. मतलब मिट्टी पे हल चलाने को ही क्या बोला? प्लोइंग ऑफ लैंड और प्लोइंग ऑफ सोइल. हल चलाना है ना,
it is only agriculture. But as the time changes, some other enterprises or businesses also added in this agriculture, like fishery, horticulture, crop production, livestock farming, apiculture, you can write down, apiculture, sericulture, etc. तो जब ये एग्रीकल्चर आया, एग्रीकल्चर वर्ड बना, तब इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या था, सिर्फ क्रॉप की कल्टीवेशन करना या फिर मिट्टी के ऊपर हल चलाना. इट्स ओनली अबाउट कल्टीवेशन ऑन सोयल और कल्टीवेशन ऑफ लैंड. बट आफ्टर दैट, एट द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अकर, it also included apiculture. Apiculture means rearing of honeybees, madhumakhi. Then sericulture, rearing of silkworm. Fisheries, pisciculture, livestock farming मतलब पशुपालन. पशुपालन में लाइवस्टॉक में क्या आ जाएगा, कैटल, गाय, बफलो, भैंस, पोल्ट्री, ये सब कुछ क्या है, रैबिट, चाहे वो हॉर्स हो, ये सब कुछ क्या है, हम उसमें लाइवस्टॉक फार्मिंग में कंसीडर करेंगे. तो देयर इज आल्सो इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट whenever you see a word cultura, it originates from Latin word, or if you see word nomi or logi, nomi or logi, like agronomy, pathology, entomology. So these words are originated from Greek language. These words are originated from Greek language. Clear? So Greek language में भी exception है एक, like pomology. Like pomology. What is pomology? Pomology, हम फ्रूट खा रहे हैं, फ्रूट को उगाना, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स इज नोन एज pomology, और साइंस of growing fruit trees or fruit crops is known as pomology. So pomo word is a Latin word, and logi, as I said earlier, logi, जहां पर logi और nomi word दिखे तो almost और ज्यादातर वो क्या होंगे, ग्रीक वर्ड होंगे. बट पोमोलॉजी में पोमो जो है वो लैटिन वर्ड है और लॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड है. As same as agriculture is originated from Latin words, means agar plus culture, soil or cultivation. Clear? In our first lecture, we will discuss about what is agriculture, what are the branches of agriculture, how we will cover this all aspects of agriculture, how we will cover the syllabus of NABARD Grade A for agriculture and rural development. And जब ये क्लासेस हो जाएंगी तो उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा आपके एग्रीकल्चर फील्ड में. So do like, subscribe and share. Clear? Okay. Now moving to our next topic, branches of agriculture. Branches of agriculture. There are so many branches. As we starting, agriculture means only crop cultivation. But after that, many branches are also included in this agriculture. So from starting, from 10,000 BC, है ना, nearly, BC means before Christ, जब ये साल उल्टे चलते थे ना, तो तब क्या है, सिर्फ हंटिंग करी जाती थी. Human used to do hunting for their food, shelter and other needs. In 8700 BC, rearing of sheep, occurred.
सबसे पहले भेड़े रखनी शुरू करी, मतलब शीप्स की रेयरिंग स्टार्ट हुई है एग्रीकल्चर के अंदर, बट इसको एग्रीकल्चर में इंक्लूड नहीं किया। आफ्टर दैट 7700 BC रेयरिंग ऑफ गोट्स, गोट्स को रखना शुरू किया। आफ्टर दैट क्रॉप कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर स्टार्ट। कैसे? इन 7500 BC कल्टीवेशन ऑफ टू क्रॉप्स, wheat, गेहूं एंड barley, wheat and barley. Wheat is for our food purposes and barley is also used as food purposes or as a liquor purposes, for alcohol purposes also. So in 7500 BC एग्रीकल्चर और क्रॉप कल्टीवेशन, सबसे पहली जो क्रॉप लगाएगी वो 7500 BC में wheat and barley को लगाया गया। But if someone ask you that क्रॉप कल्टीवेशन पहले आया या फिर लाइवस्टॉक, लाइवस्टॉक हम और क्या बोल देते हैं, पेस्टोरल फार्मिंग भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज पेस्टोरल फार्मिंग। तो इन 8700 BC पेस्टोरल फार्मिंग स्टार्ट हो चुकी थी। आफ्टर दैट क्रॉप कल्टीवेशन हैज बीन स्टार्टेड। वी विल डिस्कस इन आवर हिस्ट्री। सो दीज ऑल थिंग्स है ना, इन 500 AD all the horticulture crops have been included in agriculture. Introduction of horticulture crops have in 1500 AD. So एग्रीकल्चर ब्रांचेस में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहले फर्स्ट है एग्रोनॉमी, फर्स्ट इज एग्रोनॉमी, सेकंड वन इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मींस कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, योर गार्डनिंग प्लांट्स, योर स्पाइसेस, मिर्ची जो होती है ना, उसकी कल्टीवेशन करना, उसको देखना, उसको पढ़ना। और इसमें गार्डनिंग प्लांट्स, आपके फ्लोरिकल्चर, फ्लावर्स को स्टडी करना। इट इज अ पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर। देन एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री आल्सो नोन एज पेस्टोरल फार्मिंग एंड लाइवस्टॉक फार्मिंग। Livestock farming. In this subject, we will discuss milk production, meat production taken from animals. We rear animal for our personal needs or for commercial purposes. It is included in animal husbandry. After that, next branch is agroforestry. Agroforestry. In this we will discuss agriculture. Agro means agriculture or forestry means forest. Forest used in agriculture. Next is fisheries. Fisheries, rearing of fishes. Rearing of fishes. The study of rearing of fishes is known as fishery science or cultivation, or practically we are doing it, then it is called as pisciculture. Pisciculture. So culture word, it is also originated from Latin word agronomy. Nomy word is originated from Greek word. Horticulture, culture word is Latin, so horticulture originated from Latin word. Then agriculture economics. Agriculture economics. See, if we discuss about development of agriculture, so first stage is pastoral farming. As I said earlier, सबसे पहले जो है पेस्टोरल फार्मिंग स्टार्ट हुई, बट उससे पहले भी क्या कर रहा था इंसान, ह्यूमन क्या कर रहे थे? हंटिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? हंटिंग। सेकंड वन इज पेस्टोरल, थर्ड वन इज क्रॉप कल्टीवेशन, एंड फोर्थ वन इज ट्रेडिंग। अब थोड़े से चीज ध्यान को समझो। पहले जब ये स्टार्ट हुआ, फ्रॉम द बिगिनिंग, द एग्रीकल्चर नीड इज टू फुलफिल आवर
नीड्स ओनली। बट जैसे जैसे ये बढ़ता गया, एग्रीकल्चर नाउ डेज एग्रीकल्चर इज अ बिजनेस, इट इज अ एंटरप्राइजेस। सो जब हमारे खुद के घर भर जाते हैं, उसके बाद क्या है, फार्मर क्या करता है, जो सरप्लस जो एक्स्ट्रा है उसके बाद उसकी ट्रेडिंग करता है। अब वो ट्रेडिंग करते हुए ऐसे काम करता है कि टू यूज रिसोर्सेज एज लेस एज कैन पॉसिबल एंड टेक रिटर्न एज मैक्सिमम। कम से कम लागत पे सबसे ज्यादा जो है पैदावार लेके आना, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन लेके आना। तो ये क्या है, these all principles are included in agriculture economics. Then other branches are home science, agriculture biotechnology, agriculture economics. We will discuss in our next part. Clear? Okay. Now our first branch, agronomy. Agronomy, as I said earlier, nomy word, this means it is taken from Greek word. It is taken from Greek word. Agro also taken from Greek word. So agro plus nomos. Agro plus nomos. It is both words are combination of agronomy, and it is taken from a Greek word. Agro means as same as in agriculture. Agro means field or land or soil. And nomos meaning to manage. Manage a field. Manage a field is known as agronomy. So now agronomy is a branch of agriculture which deals with the principle and practices of soil, water and crop management. Crop management is most important. And to provide the favorable environment to the crop for getting higher production or higher productivity. There is a slight difference between production and productivity. We will discuss in our next lectures. Clear? समझ आ रहा भाई? Okay. Next, there are several branches of agronomy. There are several branches of agronomy. We will discuss in our agronomy subject that what are these branches, and mostly questions asked from, I am telling you, in each and every exam of agriculture for your NABARD grade A, 10 to 20% minimum 10 to 20% questions are from agronomy subject, because it is a most important subject. So there are several disciplines of agronomy. First one is soil science, second one is plant breeding, entomology in which we will study the insect pest, crop physiology where we will discuss the evaporation, transpiration, respiration in crops, synthesis, glucose synthesis, we all discuss in the crop physiology. Plant ecology, environment of plant, how plants survive in hot arid climate, or how plant need to survive in अलग अलग जो है इनके कैसे कैसे सिचुएशन में कैसा प्लांट जो है सर्वाइव कर सकता है और उनका एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है प्लांट इकोलॉजी. देयर आर सेवरल अदर aspects in agronomy. You can write down weed science. Weeds are those plants, those unwanted plants जो हमको फील्ड पे नहीं चाहिए. जो प्लांट्स हमको फील्ड पे नहीं चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, वीड्स. तो खरपतवार हिंदी में बोल देते हैं. तो इनकी स्टडी करने को हम क्या बोल देंगे, वीड साइंस. इट इज वीड साइंस. आफ्टर दैट we will also discuss about agrometeorology. In agrometeorology we will discuss about weather, climate change, what is La Nino, El Nino, monsoon. ये सभी जो है हम किस में पढ़ेंगे, एग्रोमेट्रोलॉजी और एग्रोक्लाइमेटोलॉजी. तो ये सभी क्या है, एग्रोनॉमी के क्या है, कुछ ना कुछ ब्रांचेस हैं जो एग्रोनॉमी के अंदर हम
पढ़ेंगे। तो व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, एग्रोनॉमी के क्या प्रिंसिपल्स हैं, ये क्या है, रिलेटेड टू क्रॉपिंग सिस्टम, टिलेज, क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्रॉपिंग सिस्टम वी विल डिस्कस फर्दर इन अवर नेक्स्ट, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो इसकी जो है डिटेल में स्टडी जो है हम अपनी अगली क्लासेस में करते रहेंगे। बट ये क्रॉपिंग सिस्टम है क्या, व्हाट इज क्रॉपिंग सिस्टम? क्रॉपिंग सिस्टम में क्या है, देखो आप एक फार्म पे गए, यू विजिट टू अ फार्म, इफ यू गो टू राजस्थान, देयर इज अ लैक ऑफ वाटर, पानी की बहुत कमी है, so they grow only one crop in year. if पंजाब में आ जाओ, ये क्या है राजस्थान, ये क्या है पंजाब, पंजाब है lot of resources, productivity of soil is highest in all over India in Punjab, so Punjab is lies in first position in productivity and resources, so Punjab can take 4 crops in 1 year. So these are the systems according to resources, according to their productivity, production. तो ये एक ही क्रॉप ले पा रहा है, ये 4 ले पा रहे हैं, इसका क्या बोलेंगे हम पैटर्न को, एक होता है क्रॉपिंग पैटर्न, हाउ वी आर अरेंजिंग द क्रॉप्स, क्रॉप्स को कैसे अरेंज कर रहे हैं, दैट इज क्रॉपिंग पैटर्न, एंड हाउ वी आर अरेंजिंग द क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू आवर रिसोर्सेस, व्हाट वी हैव, रिसोर्सेस क्या है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हम कैसी क्रॉप्स लगा पा रहे हैं, किस तरह से लगा पा रहे हैं। आप कभी फील्ड पे जाओ तो आपने कभी देखा होगा कि एक जगह पर यहां पर जो है वीट लगा रखा है एक प्लॉट पे, और एक साथ में प्लॉट में जो है मस्टर्ड लगा रखी है, सरसों। अब कई बार देखा होगा कि यहां पर जो है एक पूरे फील्ड के अंदर ये 2 लाइन जो हैं वो वीट की हैं, ये 3 लाइन और 2 लाइन क्या है मस्टर्ड की हैं, तो इसको लगाने के अलग अलग तरीके हैं, इसी को क्या बोल देते हैं, इट इज नोन एज क्रॉपिंग सिस्टम। वी विल डिस्कस इन आवर फर्दर लेक्चर, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंटरेस्टिंग, एंड एग्जाम में पूछा जा सकेगा, एग्जाम में पूछा जाएगा इससे क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है टिलेज, टिलेज मींस मैकेनिकल मैन्युपुलेशन ऑफ लैंड, हमने सोइल को मैन्युपुलेट करना है, मिट्टी को मैन्युपुलेट करना है मैकेनिकली बाय मींस ऑफ मशीन्स, मशीन्स के साथ। आपने देखा होगा किसी भी भूमि के अंदर, किसी भी सोइल के अंदर, कोई भी खेत के अंदर प्लोइंग करना, हल चलाना, वो सब कुछ क्या है, अगर वो हम काम मशीन से करते आ रहे हैं तो वो क्या है, इट इज नोन एज टिलेज। आफ्टर दैट क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, सी वी आर ग्रोइंग क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू nutrient requirement, how we can manage the nutrient requirement in our crop, it is known as nutrient management. Water management, it is, in this we will discuss about irrigation and difference between rainfall and irrigation, what are the different types of irrigation, what are the main efficiencies of irrigation, new trend in irrigation like इंडो इजराइल प्रोजेक्ट ने अभी दिया, इंडो इजराइल जो है प्रोजेक्ट चला इंडिया के अंदर, दे गेव अस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम व्हिच हैज हाईएस्ट एफिशिएंसी, नियरली 90% efficiency. What is efficiency? Irrigation efficiency, how much water we are giving to crop and how much water is taking for his growth. बाकी सभी में 30 से 40% है एफिशिएंसी, कोई भी इरिगेशन करते हैं तो 30 से 40% है, बट इन ड्रिप इरिगेशन इट इज 90%. सो वी विल डिस्कस द न्यू ट्रेंड इन इरिगेशन, हाउ वी कैन मैनेज इरिगेशन, वाटर और वाटर मैनेजमेंट इन weed management, as I said, as I told earlier, pest and disease management. In this we will discuss about pathology and entomology. इन एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी के अंदर क्या है, इंसेक्ट और पेस्ट के बारे में पढ़ेंगे.
और कुछ इसके प्रिंसिपल पढ़ेंगे। अब इसमें ये भी देखेंगे कि व्हाट इज इंसेक्ट, व्हाट इज पेस्ट एंड डिफरेंस बिटवीन इंसेक्ट एंड पेस्ट, डिफरेंस बिटवीन इंसेक्ट एंड पेस्ट। क्लियर? पैथोलॉजी, in this we will discuss about the diseases of field crop, diseases of field crop. Clear? Now moving forward, scope of agronomy. Scope: better understanding of plant and environment. Agriculture practices are modified to enhance productivity. In agronomy subject, we will discuss, we will study, we will practically acquire the knowledge of how we can increase the productivity, how we can increase the production of the land, how we can manage our water irrigation, or how we can manage our soil, and how we can reduce the attack of pest, disease on our field crop, and how we can gain the maximum profit by using minimum to minimum resources or minimum to minimum output. Clear? So it's all about the scope of agronomy. Next branch, second branch is horticulture. Horticulture. Write down. Second branch is horticulture. If there is any doubt, you can ask me. You have 1 to 2 minutes. You can ask me in my class. कोई भी डाउट है किसी भी बच्चे को यहां तक, तो अभी तक पूछ सकते हो, जो करवाया है। Clear? Okay. Now moving to horticulture. Horticulture, as I said earlier, culture means cultivation. It is taken from Latin word. Horti is also taken from Latin word. So it is also a combination of two words, mean hortus and culture. Hortus means garden and cultura means cultivation, and cultura means cultivation. Cultura means cultivation. So basically horticulture, what is horticulture? Cultivation of garden crops or cultivation of plants like fruits, vegetable, flower, spices, condiments, etc., etc. So study or growing or cultivation of fruit crop is known as pomology. Cultivation of vegetables or study of vegetables cultivation is known as olericulture. As I said earlier, logy means Greek, it is a Greek word, pomo is a Latin word. Otherwise, almost all the words ending with logy, it is originated from Greek word. It is originated from Greek word. But pomology is a combination of Latin and Greek word. Means cultivation of fruit crops. Cultivation of vegetable crop is known as olericulture. Cultivation of flower crop is known as floriculture. So these are some branches of horticulture. We will discuss in our next slide. But pomology deals with the science and cultivation and management of fruits like apple, banana, pomegranate, grapes, all the fruit crop, mango, pineapple, all the fruits crop is in pomology. Study or cultivation of grapes is also considered in different aspect. It is known as viticulture. Viti mean grapes. Culture mean cultivation. Culture mean cultivation. So grapes is also considered in pomology and it is a part of viticulture also. Next, moving next,
Olericulture, as I said earlier, which deals with cultivation of vegetables crops like okra, tomato, potato. Tomato is basically a fruit. Tomato crop basically a fruit crop. What is the difference between fruits and vegetables? What is the difference, main difference between fruit and vegetable? जब किसी चीज को सिंपल सा, when we consume any food after ripening, जब कोई भी चीज पकने के बाद हम उसको खा रहे हैं या उसको पकाकर खा रहे हैं तो उसको हम फ्रूट बोल देते हैं, उसको हम फ्रूट बोल देते हैं। जिसको हम पकने से पहले खा देते हैं तो वो क्या है, वो ज्यादातर जो है उसको हम क्या है, वेजिटेबल्स बोलते हैं। इफ वी कंज्यूम फूड बिफोर इट्स राइपनिंग, इट इज अ वेजिटेबल इन सिंपल लैंग्वेज, इन लेमन लैंग्वेज। क्लियर? टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, ओकरा, तो दीज ऑल आर क्या है, ये वेजिटेबल है। So moving next, floriculture, which deals with study of cultivation of flowering plants. Example: rose, marigold, carnation, etc., etc. है ना? Also sunflower, but sunflower is also in flower crop also, but also a field crop. Clear? Okay. Next, it is a viticulture. Viti means grapes. So cultivation of grapes. It is a branch of horticulture. It is also a branch of pomology. It is a branch of pomology or branch of horticulture which deals with the study of cultivation of wine crops, especially grapes. If we study the wine crops, it is known as viticulture, but mostly grapes are considered in this viticulture. After next, arboriculture. Arboriculture. Let's assume पार्क जाते हो, पार्क घूमने जाते हो, सड़कों पे देखा होगा, या किसी पार्क पे जाते हो, पार्क पे जाओगे तो वहां पर ऐसे करके कुछ लगा रखा होता है ना, अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगा रखे होते हैं, डेकोरेशन, डेकोरेटिव। So arboriculture is a cultivation of trees and shrubs, especially for ornamental purposes. Especially for ornamental purposes. But what is trees and what is shrub? What is trees and what are shrubs? See. One woody trunk. If there is a one woody trunk and one woody base, it is known as tree. If the wood portion or a woody stem is a greater than 1, so it is known as shrubs. If there is a no woody part in any plant, if there is a no woody plant in any plant, then it is called as herb. So if we study the cultivation of trees and shrubs for ornamental purposes or for decorative purposes, or for decorative, for decoration, किसी चीज को सजाने के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ क्रॉप्स लगा रहे हैं, जैसे कि पार्क में देखते हैं, दैट इज अर्बोरिकल्चर. अर्बोरिकल्चर लैंडस्केप गार्डनिंग, मतलब हम अगर उसी में, इट इज also considered in decorative purposes, but with fully arrangement, with full arrangement, architecturally arrangement of the garden plant for the purpose of beautification and ornamentation. It is known as landscape gardening. It is also a branch of horticulture. It is also a branch of horticulture. So wait a minute.
Just wait a minute. अभी तक क्या किया? एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर. These two are the major portion of from your exam point of view. इसमें कम से कम 20 से 40% जो है आपका एग्जाम इसी में से आएगा. क्लियर? एग्रोनॉमी में क्या पढ़ा? क्रॉप कल्टीवेशन, वीड साइंस, वाटर मैनेजमेंट, soil science, insects means entomology, disease pathology. In crop cultivation we will discuss all the crops like सीरियल्स. सीरियल्स में क्या आ जाएगा? वीट, बार्ले, राइस, पैडी, मेज, मक्का, सोरगम, ज्वार. दीज ऑल कंसीडर इन क्रॉप कल्टीवेशन. सीरियल्स, मिलेट्स, रागी, पर्ल मिलेट, बाजरा. देन ऑयल सीड. ऑयल सीड में क्या आ जाएगा? सनफ्लावर, मस्टर्ड, रेप सीड, ग्राउंडनट. क्लियर? पल्सिस. पल्सिस में ग्रीन ग्राम, मूंग, अरहर, खजानस खजान. तो we will discuss in crop cultivation. In horticulture there is some branches like pomology, olericulture, floriculture, लैंडस्केप गार्डनिंग, arboriculture, and last but not the least post harvest technology. Post harvest technology or viticulture also. In post harvest technology we will discuss about jam, jelly, squash. काटने के बाद हम उनका फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का क्या क्या करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं. जैम कैसे बनती है, जेली कैसे बनती है, ऑल्सो कंसिडर इन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी. क्लियर? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी. Now moving further, next branch is animal husbandry. Next branch of agriculture is animal husbandry, which means cultivation, management or rearing, production of domestic animal. तो इसमें कोई भी जंगली नहीं होगा जिसको हम पाल सकते हैं. पशुओं को किसके लिए पालते हैं? फॉर विच पर्पस? For food, fiber, sports, power. It is considered as animal husbandry. For improvement of quality is considered desirable by human. जो हमें चीज चाहिए उसके लिए अगर हम पाल रहे हैं डोमेस्टिक को. Wild animals are not considered in animal husbandry. The animals which domesticated for needs or for wants of humans, according to the wants and needs of humans. These all animals are considered in the animal husbandry. Considered in animal husbandry. Like what are the branches of animal husbandry? Cattle rearing, cow, गाय को कैसे पालते हैं. Buffalo, भैंस. पोल्ट्री, पोल्ट्री में हम इसमें भी कैटल में भी क्या है,
हम मोस्टली जो है कैटल फॉर मिल्क पर्पस, बफलो फॉर मिल्क पर्पस, पोल्ट्री फॉर एग एंड मीट पर्पस, पिगरी फॉर मोस्टली फॉर मीट पर्पस, एग एंड मीट, egg, meat, and also for the sport purpose. Piggery are mostly consumed as meat. Goat is for milk, meat, and some goats are for hairs, wool purpose. Other sheep is for milk, but mostly for meat and food. Some other like rabbit, horse, etc. Horses are for sport purposes. We will discuss in our annual husbandry topic. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आ जाएगा ये करके, एनिमल हस्बेंड्री. ठीक है. नेक्स्ट इज एग्रोफोरेस्ट्री. Agroforestry is any sustainable land use system that maintain or increase total yield by the combining food crops. Agro means agriculture, crops. And forestry means forest. If we combine the crops with forest to increase the yield, productivity of the land or to increase our return, पैसा ज्यादा कमाने के लिए, so it is also called as agroforestry or livestock at the same time, either alternately or at the same time using management practices. क्लियर. एग्रीकल्चर की कोई भी चीज अगर हम फॉरेस्ट के साथ, चाहे वो क्रॉप्स है लाइक सीरियल, मिलेट्स, ऑयल सीड, पल्सिस, और हॉर्टिकल्चर, फ्लोरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल, और लाइवस्टॉक में कैटल, बफलो, इनमें से कुछ भी, इफ वी कंबाइन दीज एंटरप्राइजेस टू दीज फॉरेस्ट टू इंक्रीज द यील्ड, increase our return, or increase the productivity of the soil or crop, it is known as agroforestry. It is also a branch of agriculture. In this we will discuss what is shifting cultivation, what is tonga cultivation, what is silviculture. Clear? Okay. Moving to our next branch of agriculture, that is fisheries. The production, distribution, consumption of fish and seafood which involve capturing or cultivation of fishes. Capturing or cultivation of fish species like marine freshwater, example rohu, catla, shrimp. और भी हैं कैसे, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, tuna fish. These all fishes have the protein content of 18 to 20%, but tuna has protein content 28%, nearly 28%, 26 to 28%. So these are valuable fish. Tuna, it is also considered in fishery. So if we want to know about the science of these fishes, how we rear it, science of rearing fishes is known as, or cultivation of fishes is known as pisciculture. So fishery is basically a science of, it is basically a branch of pisciculture, and pisciculture is a branch of agriculture. Clear? Moving to our next branch, that is agriculture engineering. In this branch we will discuss our farm machinery. Farm machinery में क्या आ जाएगा, plow, हमारे tools,
location and planning of farm structure, farm drainage, soil management, irrigation, rural electrification and water supply. These all we will discuss in our agriculture engineering class. So basically agriculture engineering में हम क्या पढ़ेंगे? पावर. सिंपल से एक एग्जांपल बताता हूं. आपने सुना होगा कोई भी गाड़ी जो है कितने हॉर्स पावर की, एचपी लिखते हैं, हॉर्स पावर. कितने घोड़ों की जो पावर है किसी एक के पास, एक गाड़ी में कितने घोड़ों की पावर होती है, क्या आपको पता है? आपके पास कितनी है? तो 1 हॉर्स पावर जो है 746 वोट होता है. मैं एक नॉर्मल, एक हेल्दी ह्यूमन हूं. नॉर्मल एक नॉर्मल ह्यूमन हूं. तो मेरे पास जो एनर्जी होगी वो होगी 0.1 हॉर्स पावर की. मीन्स टू से मेरे जैसे 10 लोग आए तो जाके एक घोड़े जितनी, एक हॉर्स जितनी जो है पावर होगी. क्लियर? इफ 2 bulls, pair of bulls has equal energy of 1 horse, so means pair of bulls is equal to 1 horsepower. So these all power unit, all the farm machinery like from sowing to harvesting of crop. सोइंग के टाइम पे क्या यूज करते हैं, हार्वेस्टिंग के टाइम पे कौन कौन से मशीन, इंप्लीमेंट, टूल्स यूज करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंप्लीमेंट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टूल्स, वी ऑल डिस्कस इन दिस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग. आफ्टर द मशीन्स we will discuss the soil and water management. We will discuss how we can map our field, soil mapping, survey of soil, survey of land. These all parts are included in agriculture engineering. Clear? Okay. Moving to our next branch, that is apiculture. That is apiculture. Apiculture means rearing of honeybees. Rearing of honeybees. Honeybees are not only rare for just for honey. It is rare for honey, bee wax, pollination, royal jelly, honey, bee wax, pollination, royal jelly और bee venom. बी वेनम जो डंक मारती है ना, वेनम, जहर, वो हमारे कुछ डिजीज के लिए काम आता है भाई, वो पढ़ेंगे इसमें. Honey bees rearing is household practice in India. A location where bees are kept is called an apiary or bee yard. Honey bees and their usefulness are known to man from their prehistoric time. बहुत पहले से, बहुत समय पहले से जो है ये चलती आ रही है और अब तक चल रही है. So rearing, basically rearing of honey bees for our honey production, royal jelly, for pollination, for bee venom, for bee wax. Rearing of honey bees for these all purposes is known as apiculture. And where we rear the honey bees, that shed or that place is known as apiary or bee yard. That is known as apiary or bee yard. Clear? Now, moving forward, that is lag culture. Then what is lag culture? What is lag culture? आपने सुना होगा लाख की चूड़ी, लाख की चूड़ी है ना, जो हम चूड़ियां पहनते हैं, बैंगल्स.
हम देखते हैं, इसको हम लाख भी बोल देते हैं। एक्चुअली वो जो चूड़ी है वो एक फीमेल स्केल इंसेक्ट है। वो जो है एक पेड़ पे रहते हैं, जो उसकी रेजिन, वो क्या है, एक रेजिन, एक गम, एक गूंद टाइप कुछ सक्रीट करते हैं, ऐसे चिपचिपा टाइप, उसको सक्रीट करते हैं। वो जो सेक्रीशन है आफ्टर हार्डनिंग, वो क्या है, उसको इस फॉर्म में बना दिया जाता है, उसको उसकी चूड़ी की फॉर्म में बना दिया जाता है। तो उस इंसेक्ट को क्या है, स्पेशली रेयर करा जाता है, पाला जाता है, डोमेस्टिकेट किया जाता है। तो लैक इज अ रेजिनस एक्सुडेशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ फीमेल स्केल इंसेक्ट सिंस वैदिक पीरियड इट हैज बीन यूज्ड इन इंडिया। द इंग्लिश वर्ड लैक सिनोनिम विद लाख इन हिंदी, मैंने पहले बताया, which itself is a derivative of Sanskrit word laksh meaning lakh or 100,000. So lakh is basically rare on the some trees like som, salau, ashoka, asana, arjun, है ना. So female scale insect secrete some resinous gum type. So these resinous material used for bangle purposes or for decoration purposes, आफ्टर चेंजिंग इट्स शेप, उसकी शेप चेंज कर देते हैं ताकि हम उसको जो है यूज करें। बिकॉज वी आर ह्यूमन, वी आर सेल्फिश, वी यूज ऑल दीज प्रोडक्ट्स फॉर अवर सेल्फिशनेस, वी डोंट केयर अबाउट इफ आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द सेरिकल्चर। देन आई विल टेल यू दैट हाउ सेल्फिश वी आर। क्लियर? ओके. It would appear that Vedic people know that the lac is obtained from numerous insects and must also known for biological and commercial aspect of lac industry. So these all are considered in the lac culture. After that, mushroom cultivation. But write down one more branch, that is sericulture. What is sericulture? Sari means silk. So basically rearing of silkworm. Silkworm is the insect. Rearing of silkworm for mainly for silk purpose. Mainly for silk purpose. Clear? See. First, egg of silkworm secrete some eggs, male and female meet, and this female secretes some eggs. After that it become larva, having face, eat something, larva. After that ये कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं खाता, eat nothing, and build a small cocoon thread to cover itself, to protect itself from animals, humans, birds. But these shell, we boil these shell in water or some other thing, we heat up and we take silk from these. जो उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए बनाया था, हमने उसी को यूज करके उसको खा दिया। क्लियर? देन ये एक बटरफ्लाई बन जाती है, और फिर ये फिर से बटरफ्लाई, मेल और फीमेल बटरफ्लाई जो है, इसके दांत नहीं होते ना, ये कुछ खा सकती हैं। तो ये क्या है, मेल और फीमेल आपस में बटरफ्लाई है ना, उड़ने लगते हैं, उड़ के क्या है, मेट करते हैं, फिर से जो है अंडे देते हैं, फिर ये लार्वा, ऐसे करके ये चलता रहता है। वी ऑल these things discussed in our sericulture branch. Now moving forward to our next branch, that is mushroom culture. Mushroom culture. Actually mushroom is a fungus, beneficial fungi, which is beneficial for humans, food, rich in
source of nutrition. While more than 2000 species of fungi are edible, but commercially we cultivate mainly 3 species. In 2000 species of mushroom, we cultivate mainly 3 species. Main name button mushroom, which is most famous. Button mushroom, Agaricus bisporus, oyster mushroom, Pleurotus species, and paddy straw mushroom. The mushroom which grow on paddy straw is known as paddy straw mushroom, that is Wolveriella species, are being cultivated commercially. Button mushroom comprises more than 90% of India's total mushroom production. All the 3 cultivated mushroom not only differ in their shape, size, color, by means to say in 2000 species of mushroom, there are mainly 3 cultivated species, that is paddy straw mushroom, button mushroom, and oyster mushroom. And all of the 3 cultivated mushroom are different from each other, just not for shape, size, color, but show variation in requirement of growth medium substrate. As I said earlier, button mushroom can grow on different things, but paddy straw can grow on paddy straw, जो पैडी का जो बचा हुआ स्ट्रो है उस पे. टेम्परेचर, दे डिफर इन टेम्परेचर एंड द फिजिकल फैक्टर ऑल्सो. मीन्स टू से शेप में तो चेंज है ही, बट ग्रोथ में, उसके सबस्ट्रेट में, इन सभी में चेंजेस है इन तीनों के अंदर, स्पीशीज के अंदर. क्लियर? नाउ दैट इज अवर that is all about branches of agriculture. So in today's session we discussed that agriculture origin and branches. There are several branches like agronomy, horticulture, animal husbandry, agroforestry, fisheries, agriculture economics, or apiculture, sericulture, etc. We will discuss all these branches one by one, starting from general agriculture, then agronomy, then animal husbandry, horticulture, agroforestry, fisheries in our upcoming next lectures. So do like this video, share this video. Share किसको करनी है? अपने भाई बहन मित्र सहेली बेली सबके साथ शेयर करके. Then do not forget to subscribe our YouTube channel. Thank you so much. Have a nice day. Hope you like this session. Thank you. Have a nice day. जय हिंद, जय भारत.